today let's start with chapter number 8, the temperate grasslands. So in this chapter I will tell you about the grasslands. So grasslands, what are grasslands? So grasslands are the areas where vegetation comprise mainly of grasses. So in many areas, separate forests from deserts have been found. There were few trees and shrubs in the grassland, and there may be a tropical grassland which remain hot almost throughout the year, and wet season, and temperate grasses which have hot summers and cool winter. And they are found mainly in the temperate region, the region between Tropic of Cancer and Arctic Circle, and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. सो ये रीजन है जहाँ पे ये आपके प्रेरीज हैं साउथ नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में लानोस, सवाना, पंपास, अफ्रीका में वेल्स, सवाना, यहाँ पे स्टेपीज, यहाँ पे सवानास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, राइट। दीज आर द डिफरेंट ग्रास पिट्स जो आपके लाई करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। लेट्स स्टडी अबाउट द लोकेशन ऑफ अर्जेंटीना। So it is officially known as Argentine Republic, which lies in the continent of South Africa. ये 8th largest country है. It is long 3,700 long from north to south and 1,400 kilometer है east to west. Right? It is bounded. यहाँ पे आपके Andes mountain lie करते हैं right in the west and southern Atlantic Ocean in the southeast, which is bordered by Paraguay, Bolivia. देखो यहाँ पे आपका Bolivia, यहाँ पे Paraguay है, and Brazil and Uruguay in the northeast. एंड अर्जेंटीना को हमने 4 टोपोग्राफिकल रीजन में डिवाइड करा है। फर्टाइल प्लेन जो पंपास के हैं, फॉरेस्ट्री ड्राई एंड बैरन प्लेट्यू जो आपका पेंटागोनिया जो साउथ में है, ग्रैंड चाको इन नॉर्थ एंड एंडीज माउंटेन रेंज जो आपका होम है टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड का जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर पे। सो इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, सो अर्जेंटीना इज सब्जेक्ट टू वैरायटी ऑफ क्लाइमेट। इट इज चीफली टेम्परेट, यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेनफॉल है। पंपास रीजन जो है आपका सेंटर अर्जेंटीना का, यहाँ हॉट समर होती है विद थंडरस्टॉर्म एंड कूल विंटर। यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है समर और विंटर टेम्परेचर का वो बहुत ज़्यादा हाई है। रेनफॉल जो होता है वो 25 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर का होता है, राइट। इसको हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। और जो विंड होती है अर्जेंटीना की वो कूल पैम्पर ब्लो करती है आपकी पंपास से, एंड इट इज फॉलोड बाय कोल्ड ड्राई एंड जस्टी विंड, राइट। ये डैमेज करते इतनी स्ट्रांग होती है कि क्रॉप्स वगैरह को डैमेज कर देती है। देन वी हैव वेजिटेशन, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम है, राइट। इट कैन नॉट सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट, ये डेंस फॉरेस्ट को सपोर्ट नहीं करती है। ये ग्रोथ किसको फेवर करती है? थिक जो ग्रासेस होते हैं उसको, उसकी ग्रोथ को। द ग्रासेस अपीयर्स different in different season. They look fresh and pale green. They continue to look same till summer. They gradually dry up and they look yellow or light brown in autumn. If we talk about winter, the shoots of the grasses they dry completely, but the roots remain alive. Fresh grass shoots grow out of the soil again, right? And then exterior soil of pampas वो वैसी होती है deep black. ये प्रिंसिपली ह्यूमस होती है, इसको हम मैन्योर कहते हैं। जो ग्रोथ ऑफ द ग्रासेस होते हैं, जो पेम्पास सीजन में जो ग्रासेस जिसे हम अल्फा अल्फा कहते हैं, इसकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। यहाँ पे लैश ग्रीन और रिच ग्रासेस देखने को मिलती है। Originally, जो pampas है, they have virtually no trees because fire occurs frequently and fires do not cut grasses. ऐसा नहीं है कि वो खाली आपकी ग्रासेस को किल कर रही है, उसके साथ साथ जो आपका ट्रीज है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। Today, some important species like American sycamore, eucalyptus, they are found here. The only tree-like plant native to pampas is ombu, which is an evergreen plant which is adapted to protect itself from fire. Animal life जैसे आपकी पंपास हो गई, they have adapted themselves to live in the widely grassland. Most animal found here live on the grass or burrows in the ground. The oils to build nest in the underground burrows. Geoffrey cat and the wolf with the mane are some interesting mammals that are found here. That is grey coat and black striped legs, right? So the maned wolf are very long legs to see over the tall grasses. So we can see that guancos, armadillo, opossums, fox, deer, ये कुछ important animals हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं. If we talk about people, more than 65% of Argentina population जो है वो पंपास एरिया में रहती है, right? Because they came from Spain and Italy, and the natives of Argentina were mostly hunter and gardener. Settlers from Europe found this region more suitable for farming. वो cattle, sheep, horses
They began rearing them, and during 1800, men called gochas, cowboy on the horseback, they tamed wild horses, and today few rancher workers dress as guachos. They adopted modern style, and they are commonly used to describe resident of South America. ये क्या थे? रेजिडेंट थे साउथ अमेरिका के Pampas, Patagonia grassland, Gran Cacho. They are chiefly found in the parts of Argentina, right? Uruguay, southern Chile, and they are the vendors of Pampas region. And we can say the Argentina ranchers employ guachos to work in their very large farm ranches, herding cows, riding horses around large ranches, hunting are their main economic activities. They wear wide-brimmed hats called sombreros tucked into boots. ऑफिशियल जो आपकी लैंग्वेज है अर्जेंटीना की वो स्पेनिश है जिसे हम कैस्टिलानो कहते हैं. द स्टेपल फूड इज ब्रेड विच इज मेड ऑफ wheat flour and meat. They are hardworking and they have used it for natural resources. Argentina has made remarkable contribution in the field of art and culture. If we talk about art and culture, उसमें भी इनके अच्छा खासा इन्होंने काम कर. ऑक्यूपेशन ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को रियर कर रहे हैं. इन्होंने इनको डिफरेंट सेक्शन और फेंच पे डिवाइड करा है. Gauchos move herds of cattle and sheep from one section to another. The ranchers grow alfalfa in few sections and they provide nourishing fodder for the cattle. And some of them also rent out part of their ranchers to tenant. इनको हम guachos कहते हैं. They work in farm together and they are comfortable house built in one part of the ranch. The Pampas region is suitable for growing important food crop. जैसे आपका wheat हो गया, corn, oat, barley, rye. They are grown on large farm. Most of the work at this farm is done by machines, right? As the population is less, type of farming is called extensive farming. Tractor are used for plowing and motor pumps for irrigation. The waste straw or the dried stems and leaves, they are left behind on the field. They are either chopped or they are spread on the field or baled as they feed and bedding for livestock. It is termed to refer domesticated animals related to reared to produce food or fiber or for labor. If we talk about major city, so your major city is Buenos Aires, largest city, capital of Argentina. It's an important center for trade and commerce. It is most thickly populated city in Argentina. Cordoba, Santa Rosa, Mendoza, Salt, La Patala, Santa Fe. ये कुछ और other important cities है which are found there. Right? This is all about in this chapter. Hope you understood. Now we'll meet in next class. That's all for today. Thank you.